Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I'm going to start the practical 3 and it's lecture 1, and the title of this practical is Map, its type and its uses. Okay, so this practical is basically based upon a very important topic of geography, that is the map. Okay, so let's move on quickly to the definition of map. A very simplest definition I have used to understand what is actually the map, and then we will move on further for the types and the uses and the difference of the map with other things. So the definition of the map is, it is a conventional representation. Conventional, what does it mean? It meant to a traditional and a very basic representation of small or any large area of the surface of the earth on a flat piece of the paper. Okay, so flat piece of paper, it would be a map, and if you represent and draw a large area of the earth on that flat piece of the paper by very conventionally and very traditionally, so that representation is called a map. Okay, in your Park Studies book you have seen number of maps, but you people did not notice what is actually the map and how does it look like. So in geography you will going to understand that map is a representation of an area, and the area belongs to the surface of the earth, the region of the earth, the country on the surface of the earth, or any small or large area. But when you convert them, when you draw them, what is actually on the surface of the earth, the ground reality, and you convert them in onto the flat piece of the paper, so that representation on the piece of पेपर विल बी कॉल्ड एज मैप. सो दिस इज़ द वेरी सिंपलेस्ट डेफिनेशन कि जब कभी भी हम ज़मीन पर मौजूद किसी भी फीचर को किसी पेपर पे उतारने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू सम रूल्स एंड अकॉर्डिंग टू बाय फॉलोइंग सम लाइक मेथड्स, सो दैट विल बी कॉल्ड एज मैप. Okay, there are few unique properties regarding the map. As I have earlier said, it's a conventional picture of the earth. It is a picture, but a very conventional picture, and because it needs to follow some symbols, some sign. If you see a map, if you see any type of the map, that map will be showing different colors, different areas, different lines, and those lines when you actually saw on the surface of the earth must be representing any road, river, tree, canal, railways, anything. But you cannot draw actually on the map on the flat piece of the paper. So what you do at that time, you use some symbols. If you ever visited the road, the motorway, or any other area, when you are approaching towards any restaurant or a hotel, you must have noticed a symbol of hotel. Or in a case if you are going towards a school or any institution, there must be a conventional sign on the road has been drawn. Or in a case if you are on the way of like any hospital, you must have noticed a conventional symbol on the road. So those symbols are basically representing where you are moving or where you are going, and a few kilometers away what destination is going to get रीच. ठीक है, तो हम कभी भी अगर आप किसी भी रोड पे जा रहे हो, लाइक सपोज आप किसी भी मोटरवे पर जा रहे हो और आपको पेट्रोल चाहिए, तो थोड़े ही टाइम के बाद आपको ऐसे सिंबल, ऐसे साइन जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं. कोई होटल आपको चाहिए होता है तो उन्होंने वहाँ पे वो सिंबल्स ड्रॉ किए होते हैं जस्ट फॉर द वेलफेयर, जस्ट टू क्रिएट एन ईजीनेस, जस्ट टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग कि आगे कुछ टाइम के बाद क्या आ रहा है. ठीक है, तो मैप जो है बेसिकली कन्वेंशनल मेथड है, एंड दैट कन्वेंशनल मेथड बेस्ड अपॉन कन्वेंशनल सिंबल्स. सो रोड, रिवर, ट्रीज, कैनाल्स को अगर एक्चुअली हम फ्लैट पीस ऑफ पेपर पर ड्रॉ करने लग जाएं तो इट विल बी अ मैसी थिंग, इट विल बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स पिक्चर बन जाएगी, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द रीडर टू अंडरस्टैंड. सो वट यू कैन डू एट दैट टाइम, यू कैन चूज सम सिंबल्स, एंड इफ यू विल ड्रॉ दोज सिंबल्स on that flat piece of the paper to represent the surface of the earth actually, so those symbols will be representing, and in the end you will draw a key or the index, और index में आप mention करोगे कि this symbol, the red color or the red line or the dotted line or the continuous line or circle or anything which you have used for the conventional symbol. आगे जाके आप conventional symbols का एक पूरा chapter पढ़ोगे जहाँ पर आप याद करोगे कि कौन कौन से signs जो हैं वो किस किस चीज़ को represent कर रहे हैं. Then you people will better understand कि what is actually here the conventional signs or the symbols meant to. But आप अभी के लिए बस इतना जानना ज़रूरी है कि मैप पर
एग्जैक्टली वो सारी चीज़ें, वो रोड्स उतनी मेजरमेंट के और उतनी थिकनेस के, उतनी लेंथ के नहीं ड्रॉ किए जा सकते, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज़ नॉट पॉसिबल टू बी ड्रॉन ऑन द मैप. So what do people do at that time, or the cartographer, because the people who are technically and professionally draw the map are called cartographer, and the study of that map making or the construction of map making, the study is called cartography. That question could be asked in your viva, so you should understand what is actually cartography and whom to call the cartographer. Okay, so this is basically the first thing, that map is a conventional picture. Conventional picture कैसे है? Because it based on the conventional symbols, and those symbols फॉर एग्ज़ाम्पल रोड, रिवर, ट्रीज़, कैनाल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. ये सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारी सरफेस ऑफ द अर्थ पे मौजूद होती हैं. कोई चश्मा हो सकता है, कोई कुआं हो सकता है, कोई कैनाल आ सकती है, कोई रेलवे लाइन आ सकती है, कोई रेलवे ट्रैक आ सकता है, कोई मोटरवे आ सकती है, कोई स्पीड ब्रेकर आ सकता है. कुछ भी जो आ रहा होगा, दैट कैन ईजिली बी ड्रॉन ऑन द फ्लैट ऑफ पीस ऑफ द पेपर बाय यूजिंग दोज सिम्बल्स. बट वट यू नीड टू डू, you need to mention those symbols at the end in the index or in the key to represent. So every map, and another property of the map is it is drawn on scale. Okay, because on the surface of the earth the area is very large. You need to select a scale. Yesterday in the lecture 2, practical 2, we have done this thing that we need to select a scale. For example, we have done this thing that 2 kilometer or 1 kilometer was representing by 2 centimeter. 1 kilometer on the surface of the earth, 2 centimeter on flat piece of the paper. यानी ज़मीन पर मौजूद 1 किलोमीटर के इलाके को दिखाने के लिए हमने 2 सेंटीमीटर की लाइन को चूज़ किया था. तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमें एक स्केल मुंतखब करना पड़ेगा, और उस स्केल के अकॉर्डिंगली हम एक्चुअल एरिया ऑफ द अर्थ दिखा रहे होंगे. ओके, so now there are the types of map on the basis of scale. As I have said in the previous part, that maps are basically drawn on some specific scale. Scale could be the larger, the medium, or the smaller one. According to the need, the scale will be chosen, and on the basis of the scales, maps could be divided into its 3 types. So their names are, the one type of the map is named as topographical map, the second one is named as cadastral map, and third category is called as atlas map. So let's start the definition of each and every type of the map, and do remember this division is done on the basis of scale. Okay, here you can see a topographical map, the first type of the map. It is very important to understand what is actually the topographical map. Girls, if you remember the topographical map we have discussed in the theoretical portion of geography, because topographical maps are those maps which deals the geographical feature, the physical feature, the physically existed features on the surface of the earth. Whenever there is a need to draw those features on a flat piece of a paper, that specific type of the map which will be called as topographical map, or could be called as topographical sheets. So whenever you visit any tourist area or any hill station or any other like recreational point, so you need to take a look before you make any itinerary plan. So you need to look on the topographical map to understand, if you visit that specific area, what feature you would have, you could face, and you could use for the recreation. So these topographical maps could be representing the mountain, the valley, the plain surfaces, the water bodies, and many more. So any physical feature which you will encounter if you are making a plan to visit that specific area, or any research purposes, or and the mode of traveling could be anything. तो उस थीम के अकॉर्डिंगली जब आप उस एरिया को जाके विज़िट करते हो, तो वहाँ पर आपको जितनी फ़िज़िकल फ़ीचर्स मिल सकते हैं या होंगे वहाँ पर, वो सब जो है इन टोपोग्राफिकल मैप्स में दिखाए जा सकते हैं. जैसे आप किसी हिल स्टेशन को या किसी मोनूमेंट को या किसी हिस्टोरिकल प्लेस को विज़िट करते हो, तो उसकी एंट्रेंस पे एक टूरिस्ट मैप लगा हुआ होता है, एक गाइड मैप लगा हुआ होता है, जो कि उस जगह के ईच एंड एवरी
पाथ को और उसकी सारी डायरेक्शंस को आपके सामने रख देता है कि इस मोनूमेंट में, जैसे बादशाही मॉस्क एक बहुत बड़ा कह लिया जाए हिस्टोरिकल एरिया है, तो उसमें जब लोग जाते हैं तो बहुत सारी जगहें मिस कर आते हैं, लेकिन अगर वो मैप को देखकर जाएंगे तो ईच एंड एवरी प्लेस कुड ईजीली बी विजिटेड एंड कुड ईजीली बी फाउंड. सो टोपोग्राफिकल मैप आर बेसिकली दोज मैप्स विच आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द लोकेशन ऑफ एनी जोग्राफिकल फीचर. ठीक है, एनी जोग्राफिकल फीचर, व्हाट डज इट मीन? एनी फिजिकल फीचर, it could be a mountain, it could be a plain, it could be a plateau, it could be a valley, desert, water body, or any other thing. ठीक है, few examples have been used, but what does it mean? There could be any other thing. The most important thing in the topographical map is that these maps are basically drawn on large or medium scale, because I have earlier said scale is very important entity on a map is based on a scale that must be full of information. So to cover massive information, this topographical map has been drawn on large and medium scale. अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको भी क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आगे जाके भी हम इस्तेमाल करेंगे कि लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल. लार्ज स्केल वो स्केल होंगे क्योंकि पर्पज़ है ना, थीमेटिक मैप्स हैं, तो पर्पज़ ये है कि भी हम चाह रहे हैं कि एक बड़े एरिया की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यानी ज़्यादा एरिया कवर हो जाए. तो ज़्यादा एरिया जब कवर करना होता है तो लार्ज स्केल मैप्स बनते हैं. लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे कि टोपोग्राफिकल मैप में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं एक लार्ज एरिया की, तो हम यहाँ पर उसको लार्ज स्केल मैप पर बनाएंगे. लेकिन अगर हमारा पर्पस ये हो कि हम एक बड़े से एरिया को बस कवर कर लें और कुछ इन्फॉर्मेशन को हम अगर थोड़ा सा कह लिया जाए इग्नोर भी करना चाहें या उसको मल्टीपली ना देखना चाहें, तो फिर हम स्मॉल स्केल चूज़ करते हैं. तो आई रिपीट कि टोपोग्राफिकल मैप basically everywhere in the world normally being drawn on large or medium scale, because this is the thematic map, and the purpose to use this topographical map to understand basically the topographical features, topography features, the physical features. It could be a mountain, plain, valley, anything. So उन एरियाज़ को देखने के लिए लार्ज स्केल यूज़ किया जाएगा ताकि डिटेल इन्फॉर्मेशन उन एरियाज़ की मिल सके. ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पर डिटेल मिले कि एग्जैक्टली रूट्स क्या है, पाथ्स क्या है, डेस्टिनेशंस क्या है, डायरेक्शंस क्या है, विच फैसिलिटी विच यू कुड हैव और विच थिंग्स यू हैव टू बी बेयर. तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऐड होंगी. Okay, so the second category or the type of the map is known as cadastral map, and if you have heard this term cadastral, so cadastrians or the cadastral maps are basically the representation of or the graphic representation of your property. ठीक है, so आपके घर की जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, इसकी मलकियत, इसकी ऑनरशिप का रिकॉर्ड जो मैप रखता है, that is the cadastral map. So basically it's a comprehensive land map that is the recording of real estate or real property of the country. I have used the word country, but it meant to any specific area. So whenever you are concerned to record or to keep the thing in record of a field, खेत, या फिर कोई भी लैंड ओन प्रॉपर्टी या एनफोर्समेंट लॉ डिसिप्लिन्स को मेंटेन करने के लिए, तो ये कैडेस्ट्रल मैप जो हैं वो पर्पसफुली यूज़ किए जाते हैं. और ये एक ऐसे मैप्स होते हैं जो कि सर्वे पे डिपेंड करते हैं. ठीक है, आफ्टर यू मेकिंग द सर्विस बाय द कैडेस्ट्रियंस और द ऑफिशियल मेंबर्स, द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन वाज डन टू रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी बाउंड्रीज. ठीक है, सो व्हाट इज़ एक्चुअली द लिमिटेशन ऑफ द बाउंड्री दैट कुड easily be understood by the cadastral map. So to keep the thing in the record, the property, the entirety, the land utilization, everything will be recorded, and to keep in the record, the cadastral maps are basically drawn. So purpose क्या है इसका? ये आपकी land record में real estate property dealers ये जो हैं ये इस तरह के maps को यूज़ करते हैं. या जैसे अब नई कॉलोनीज़ वगैरह में जब भी घर बन रहा है तो पहले मैपिंग हो रही है, रिकॉर्ड रखा जा रहा है. सो दोज मैप्स आर बेसिकली डील विद द कैडेस्ट्रल मैप्स. Okay, here there is a third category or the type of the map which is known as atlas map, and you must be having an atlas at your home, Oxford atlas, Orbis atlas or any other type. So atlas maps are basically the collection of maps, और आपको आइडिया होगा कि उसमें बहुत सारे, अगर हम पाकिस्तान के एटलस लेते हैं तो उसमें पाकिस्तान के जो हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पॉपुलेशन और अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थीम जो हैं टोपोग्राफिकल
तो एटलस मैप जो है इट्स अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ मैप्स और अ बुक ऑफ अ मैप, ठीक है। एंड एवरीबडी नोज़ कि व्हाट इज़ एक्चुअली एन एटलस, बिकॉज बहुत सारे मैप्स को जब इकट्ठा करके एक बुक बना दी जाती है तो उसको एटलस कहा जाता है। एंड टिपिकली दैट मैप बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ बिगर एरिया और द लार्जर एरिया, तो मस्ट बी ड्रॉन ऑन अ स्मॉलर स्केल to cover large areas maximum information. So of earth or any region of the earth, these maps could be drawn. So in this practical 3 we have done the maps, its basic main types, and there are further types also been given, like on the basis of different criteria, the weather maps, the climatic map, the distributional. So different other types of maps are also been like present, but we have done the basic or the main types of the map. Now the next part after giving the discussion of the maps and maps basic types and their uses, now we need to cover the differences between the map, charts and the pictures, ठीक है। सो इस प्रैक्टिकल में आपको तीनों की डायग्राम अलग अलग ड्रॉ करनी है, मैप की, चार्ट्स की, पिक्चर की, जो कि मैं इस लेक्चर के एंड पर तीनों पिक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, so let's move on to the difference. What is map, charts and picture? Map is basically a graphical or a visual representation of an area, while picture is a representation but a person, landscape, building upon a canvas paper or any other surface by drawing, painting, printing or photography. What does it mean, girls? It meant to कि map जो है वो basically graphical representation है और ये 2 dimensional area है, लेकिन photograph जो है वो it could be 3 dimensional, यानी length width के साथ ये depth को भी cover करती है। लेकिन photograph जो है वो आप अपने कह लिया जाए मकसद के accordingly आप उसको interpret नहीं कर सकते। जो उसमें दिख रहा है that is actually the representation, or there are number of methods to do this. So whenever we talk about in geography, the photographs does not deal with it, rather we need to take a look on the aerial photographs. So a thematic map or the aerial photographs are used, while map जो है graphically represent कर रहा है किसी भी area को, और यहाँ पे photograph किसी भी चीज़ को, चाहे वो person हो, landscape हो, building हो, any other entity जो है could be captured. Okay. Now the third thing that is chart is left कि इसका क्या डिफरेंस है इन लोगों के साथ। तो चार्ट जो है एक डिटेल्ड किस्म का वर्किंग डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आपने देखा होगा कि पाई चार्ट्स की अगर हम सिंपल बात करें या बार चार्ट की या किसी भी ग्राफ की बात की जाए, तो उसमें जो है क्वालिटी क्वांटिटी को, ईच एंड एवरी कॉन्टीन्यूस प्रोसेसेस को जो है वो डिस्कस किया जाता है, ग्रोथ देखी जा रही होती है, फर्दर फ्यूचर जो है एस्पेक्ट्स देखे जा रहे होते हैं, वाइल पिक्चर और मैप जो हैं वो स्टैटिक हैं, उनमें ये सब नहीं देखा जा रहा। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। सो इन द एंड आई विल शेयर यू 3 पिक्चर। द वन इज़ रिप्रेजेंटिंग अ पाई चार्ट, द सेकंड वन इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ द वोल्केनिक eruption, दैट इज़ अ पिक्चर, एंड द थर्ड वन यू नीड टू ड्रॉ अ वेदर मैप ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर प्रैक्टिकल 3 एंड लेक्चर 1। तो इसके लेक्चर 1 में ही प्रैक्टिकल 3 कवर हो गया। अब अगला लेक्चर मैं आपको प्रैक्टिकल 4 का भेजूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। So girl, this is the diagram you need to draw on the blank page, and that is basically representing a chart, and you can make an heading of that block के ये chart को represent कर रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह का कोई भी pie chart draw कर सकते हैं। Okay, here you can see a picture that is a volcanic mountain, because picture is a detailed concept, does not only deal with the length or the width, rather the thickness or the depthness it can also be understand by it। तो picture में जो जब ये mountains वगैरह को इस तरह से cover किया जा रहा होता है, तो pictures और diagrams यूज़ की जाती हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो सके। तो ये आपने जो है ये सेकंड पेज पे, ब्लैंक पेज पे, पहले पे आपने चार्ट बनाया, सेकंड ब्लैंक पेज पे आप वॉल्केनिक माउंटेन यानी आप पिक्चर बना दोगे। ओके, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज करती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप इस वेदर मैप को, पाकिस्तान डेली वेदर मैप को क्लियरली ड्रॉ कर सकें। और मैं इसकी एक अलग से फ़ोटो भी जो है वो इसमें इस लेक्चर में डाल दूँगी ताकि आप उसको देख सकें। तो ये मैं इसकी वीडियो बना के आपको दे रही हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें कि आप इसको कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अ वेदर मैप, and that weather map is basically drawn on some specific scale, and that weather map is to represent an area, to tell about the weather condition. And this map is purposefully drawn because the meteorological department deals with it by recording the temperature, the air pressure, the humidity and rainfall on daily basis, ठीक है। So this is a weather map.
ओके गर्ल्स, तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह ताला अब आपको प्रैक्टिकल 4 मिलेगा।